All right. Good morning, everyone. Am I audible? Good morning, everyone. Am I audible? All right. Good morning, everyone. So this is Dr. Kashish Grover, and I am starting with Unit 9: drugs acting on nervous system. Drugs acting on nervous system. Yeah, good morning, sir. You can carry on with the class. All right. Thank you so much, sir. Thank you so much. Now, so my first topic here is drugs acting on nervous system, and here I'll be talking about sedatives and hypnotics. In sedatives and hypnotics, I'll be talking about barbiturates, benzodiazepines, newer compounds. After that, I'll be talking about narcotic analgesics, then non narcotic analgesics. What are sedatives and hypnotics? Sedatives and hypnotics are the drugs which induce sleep, which induce calmness. Then we have analgesic. Analgesic means the drugs which help us in removing the pain. They are of two types: narcotic analgesic, non narcotic analgesic. Then we have general anesthesia. Then we have anti epileptic agents, some psychopharmacological agents, CNS stimulants, and we'll be also talking about drugs used in Parkinson's, Alzheimer's, and other conditions. So, without any delay, let's get started. Introduction. The introduction here: the central nervous system consists of brain and spinal cord. It is the seat of autonomic nervous system, consciousness, motor coordination, our behavior, thoughts, and memory loss. So the objective here is, after studying this unit, you should be able to explain the cause of various neurological and psychological problems. You should be able to classify the drugs and describe the clinical use of various drugs. Sedatives. What are sedatives? These are the agents which reduce anxiety and exert. Sedatives are the drugs which reduce anxiety, and they exert a calming effect with little or no effect on motor and mental function. सो सिडेटिव्स क्या हैं? जो हमारी एंजाइटी को ख़त्म करते हैं, हमें काम डाउन करते हैं. हिप्नोटिक्स क्या है? हिप्नोटिक्स वो ड्रग्स हैं जो हमारे को ड्रॉजीनेस यानी स्लीप इंड्यूस करता है. सो दी सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, इनका ग्रुप है. सबसे पहला है बारबिचुरेट्स. Barbiturates, they are derivatives of barbituric acid. They are general CNS depressant. ये basically CNS depression करते हैं. ये sedation, hypnosis, general anesthesia इनका काम करते हैं. And barbiturates produce depression of central nervous system in dose dependent manner. अगर डोज डिपेंडेंट मैनर से ये CNS का डिप्रेशन करते हैं. स्मॉल डोज अगर आप देंगे तो ये एंजाइटी को रिलीव कर देंगे, एंड अगर आप ज़्यादा डोज देंगे तो ये स्लीप को इंड्यूस कर देंगे. ठीक है. हैंगओवर इज स्पेशली सीन इन लॉन्ग एक्टिंग बारबिचुरेट. हैंगओवर भी दिखाई देता है. दे प्रोड्यूस फिजिकल डिपेंडेंट एंड दे हैव अब्यूज पोटेंशियल. अब्यूज पोटेंशियल का मतलब है लत लगने का डर होता है इस दवाई को देने के बाद. Now,
If I talk about benzodiazepines, they are used in anxiolytic. एंग्जियोलिटिक मतलब एंजाइटी को खत्म करना, एंजाइटी को खत्म करना। कुछ न्यूअर कंपाउंड्स भी हैं जैसे जोपिक्लोन, ये शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब नींद ना आना, इस पे यूज किया जाता है। जोल्पिक्लोन, जोल्पीडेम, जोल्पीडेम जो है एक नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक है, ये शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ इंसोम्निया में देते हैं। ये दोनों ही ड्रग हम शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ इंसोम्निया में देते हैं। अच्छी बात ये है दे हैव लो पोटेंशियल फॉर अब्यूज करने का चांस कम है। ना व्हाट आर नारकोटिक एनाल्जेसिक, अगर मैं बात करता हूं नारकोटिक एनाल्जेसिक की, अगर मैं नारकोटिक एनाल्जेसिक की बात करूं, एनाल्जेसिक क्या है? ये वो ड्रग्स हैं जो पेन खत्म करते हैं सीएनएस पे एक्ट करके या फिर पेरिफेरल मैकेनिज्म में। अब नारकोटिक एनाल्जेसिक में ओपियोइड, एनाल्जेसिक में दो तरीके के हैं, एक होता है ओपियोइड या नारकोटिक, एक है नॉन ओपियोइड लाइक एस्पिरिन लाइक, है ना। नाउ कमिंग टू ओपियोइड्स, ओपियोइड्स एक मिल्की एक्सुडेट है by incising unripe seed capsule of poppy plant, एंड इससे हमें सबसे पहला मिलता है मॉर्फिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्कालॉइड है एक्सुडेट में। मॉर्फिन एनाल्जेसिया करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में एक्शन करके। द मेन रीजन ऑफ मॉर्फिन इन सीरियस डिप्रेशन इज फर्दर रिजल्ट इन एनाल्जेसिया। रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर देता है, ये कफ सेंटर को डिप्रेस कर देता है, स्लीप को ले आता है, और साथ साथ यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब बहुत अच्छा लगना, यूफोरिया का मतलब बहुत अच्छा लगना। नाउ मेन थेराप्यूटिक यूज, अब यूज क्या क्या है मॉर्फिन का हम देखें। अगर हमने पढ़ा मॉर्फिन पेन कम कर रहा है, एनाल्जेसिक, यस दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। कौन सा पेन? कोई भी तरीके का पेन, सिवियर से सिवियर पेन मॉर्फिन खत्म कर देता है। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के अंदर हम मॉर्फिन देते हैं। इन सप्रेशन ऑफ कफ एंड डिस्निया, सीडेशन के लिए देते हैं, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के लिए देते हैं। उसके बाद है हमारे पास कोडीन, लेस पोटेंट एनाल्जेसिक है मॉर्फिन से, बट एंटीटसिव इसका एजेंट प्रेजेंट है, इसका एंटीटसिव काम है खांसी के लिए। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। देन वी हैव पेथिडीन, ये भी एनाल्जेसिया करता है। एंड देन वी हैव फैंटानिल, fentanyl is indicated as a narcotic analgesic supplement in general and regional anesthesia। जब हम एनेस्थीसिया देते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, उस केस में फैंटानिल को यूज करते हैं। मीथाडोन एक सिंथेटिक कंपाउंड है जो मॉर्फिन के जैसा ही है। इसको हम विसरल पेन में और एंटीटसिव, एंटीटसिव मतलब खांसी के लिए जो कफ सिरप देते हैं उसको एंटीटसिव बोलते हैं। ट्रेमाडोल आपने बहुत सुना होगा, ये भी एक ओपियोइड है, एंड it is indicated in moderate to severe acute chronic painful diagnostic procedure, arthralgia, musculoskeletal pain। ट्रामाडोल अगर आपने देखा होगा प्रैक्टिस में, इमरजेंसी में कोई भी ट्रॉमा का पेशेंट आता है, ट्रामाडोल इज यूज्ड वेरी लार्जली because it has a very good action on pain. Then we have agonist and antagonist. These are the agents which are used as antidote of opioid poisoning. अब हर चीज फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान के साथ भी आती है।
एंड उनमें से एक है ओपियोइड। ओपियोइड का बहुत बड़ा फायदा है, पेन मैनेजमेंट के लिए ये काम आती है, लेकिन इसकी दो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। एक तो है एडिक्शन हो जाती है लंबे समय तक यूज करेंगे तो, और दूसरा है अगर ज़्यादा यूज़ किया तो पॉइजनिंग के चांस है। तो अब हमें दोनों के लिए एंटीडोट निकालना होता है, जो इसके काम को अगे एगोनिस्ट तो होता है जो साथ में काम करे, एंटागोनिस्ट होता है जो अगेंस्ट काम करे। पेंटाजोसिन जो है ये एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट है मॉर्फिन का, और इसको एनाल्जेसिक की तरह यूज करते हैं। ये मॉर्फिन के जैसा इफेक्ट डालता है, माइल्ड टू मॉडरेट पेन के अंदर हम इसे यूज करते हैं। नेलोरफिन जो है ये कंजेनर है मॉर्फिन का, इसको भी पेन के लिए यूज करेंगे। देन हमारे पास है नेलॉक्सोन। नेलॉक्सोन जो है, अगर ओपियोइड की ओवरडोज हो जाए, मॉर्फिन की पॉइजनिंग हो जाए, तो नेलॉक्सोन यूज करते हैं। इसके जैसा ये कंपाउंड है नैलट्रेक्सोन। ये नैलट्रेक्सोन ज्यादा पोटेंट है एंड लॉन्गर ड्यूरेशन तक काम कर सकता है, लॉन्गर ड्यूरेशन तक काम कर सकता है। अब हम चलते हैं नॉन नारकोटिक एजेंट्स के ऊपर, जिन्हें हम एनसाड्स भी बोलते हैं, एनसेड्स भी बोलते हैं। ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं। ये पेन खत्म करते हैं विदाउट इंटरैक्टिंग विद ओपियोइड रिसेप्टर्स एंड सीएनएस। ओपियोइड जो हमारी ड्रग्स थी, नारकोटिक ड्रग्स जो होती हैं, वो पेन खत्म करती हैं सीएनएस से इंटरैक्ट करके। पेन एनसेड्स खत्म करता है, लेकिन ये सीएनएस से इंटैक्ट नहीं करता। और सबसे अच्छी बात है एंटीपायरेटिक एक्टिविटी, बुखार के लिए भी ये काम करता है। पेन खत्म करता है, बुखार खत्म करता है, एंटी इंफ्लामेटरी, ये सब इसके इफेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से हैं एजेंट जो इस कैटेगरी में आते हैं? पहला है सैलिसाइलेट, जिसके अंदर एस्पिरिन आती है, एंड दे आर यूजफुल इन रिलीविंग डल इचिंग, थ्रोबिंग, पेन ऑफ मसल जॉइंट्स, डिस्मेनोरिया, टूथेक, इन सब के अंदर ये काम करता है। ये एक पेन के अलावा एक एंटीपायरेटिक की तरह भी यूज किया जाता है बुखार उतारने के लिए, एंटी इंफ्लामेटरी, रूमेटिक, एंटी गाउट एंड एंटी प्लेटलेट एजेंट की तरह भी काम करता है। एस्पिरिन आता है इसके अंदर, फिनाइल ब्यूटाजोन है। उसके बाद देन है इंडोमिथासिन। इंडोमिथासिन एक एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी है इसमें भी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और गाउट में काम आता है। देन वी हैव प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, जैसे आइब्यूप्रोफिन हो गया, फ्लोरबीप्रोफिन, कीटोप्रोफिन, नेप्रोक्सन एटसेट्रा। दे आर इंडिकेटेड इन रोमेटॉइड एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इन सारी दिक्कतों में हम आइब्यूप्रोफिन को यूज करते हैं। आइब्यूपैरा के नाम से हमारी प्रैक्टिस में आइब्यूप्रोफिन और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन आता है। देन वी हैव अदर ड्रग, एंड दिस ड्रग की कैटेगरी में हमारे पास मेफेनेमिक एसिड आता है। मेफेनेमिक एसिड आपने मफ्टाल के नाम से ये ड्रग जो है कंज्यूम हो सकता है अपने लाइफ में की हो, अगर पेन एब्डोमेन होता है, डिसमेनोरिया होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, तो हम मेफेनेमिक एसिड, मेफ्टाल के नाम से जो ये ड्रग आती थी, they are indicated in muscle, joint and soft tissue pain, dysmenorrhea, osteoarthritis. Then we have piroxicam, एंड ये पिरोक्सीकैम एक नई तरीके की एनसाड है, और ये भी रोमेटिक आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन सारी बीमारियों में यूज किया जाता है। देन वी हैव डाइक्लोफेनेक। ये एक एनसाड है विद प्रोनाउंस्ड एंटी रूमेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक एक्शन। एंड उसके बाद आ जाती है पैरासीटामोल। आई गेस हम सब ने पैरासीटामोल अपनी लाइफ में कंज्यूम किया होगा। एंड पैरासीटामोल जो है रैपिड रिलीफ ऑफ फीवर, पेन कर देता है। देन कीटोरोलैक
इसका भी सेम ही एक्शन है एंड ये शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट पेन को कंट्रोल करता है। देन सेलिकॉक्सिब, ये एक एंसाइड है विद कॉक्स2 selectivity. It exhibits anti-inflammatory and analgesic and antipyretic activities. अगर मैं बात करूँ उसके बाद रोमेटिक आर्थराइटिस के लिए क्या क्या ड्रग्स काम आएंगी। रोमेटिक आर्थराइटिस ऑटोइम्यून क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी जॉइंट की डिजीज है ये। इसमें प्रोग्रेसिव सिमेट्रिकल डिस्ट्रक्टिव डिफॉर्मिंग पॉली आर्थराइटिस होता है। प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ने वाला, सिमेट्रिकल मतलब राइट और लेफ्ट दोनों जगह, डिस्ट्रक्टिव मतलब जॉइंट्स की डिस्ट्रक्शन, डिफॉर्मिंग मतलब डिफॉर्मिटी हो जाएगी, पॉली आर्थराइटिस मतलब बहुत सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे। ये यूजुअली स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड को अफेक्ट करता है एंड हाथों को ज़्यादा अफेक्ट करता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें हम एनसेड्स देते हैं, लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। अगर फिर भी सिम्टम्स ना कंट्रोल हो तो डीएमडीज देते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स। एंड डीएमडीज के अंदर क्या आता है, गोल्ड आता है, डी पेनिसिलामीन आता है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, सल्फासेलाजीन, इम्यूनोसप्रेसेंट्स लाइक methotrexate, एज़िथियोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन। अगर मैं गाउट की बात करूं तो गाउट एक ऐसी बीमारी है जिसको हिंदी में गठिया बोलते हैं। ये इंक्रीज यूरिक एसिड की वजह से बढ़ जाता है। जब ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाता है ये जॉइंट कार्टिलेज किडनी में जाके जमा हो जाता है। अगर एक्यूट गाउट का अटैक है तो एनसेड्स, कॉल्चिसिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। अगर क्रॉनिक गाउट है तो हम उसे यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स लाइक एलोप्यूरिनॉल और यूरिकोसोरिक एजेंट जिसमें हम यूरिक एसिड की सिक्रीशन बढ़ा देते हैं। कॉल्चिसिन एक ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है एक्यूट गाउट का, हमने ऑलरेडी देख लिया। एलोप्यूरिनॉल जो है प्राइमरी हाइपर यूरिसीमिया करता है, यूरिन से यूरिक एसिड को निकालता है। प्रोबेंसिड भी यही काम कर रहा है, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड कर रहा है, पर रीअब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा है ये किडनी के अंदर। देन वी हैव सल्फिन पायराजोन एंड इसका भी यूरिकोसोरिक एक्शन है, यूरिन से यूरिक एसिड को निकालना। अब जनरल एनेस्थीसिया की अगर मैं बात करता हूँ तो जनरल एनेस्थीसिया में नाइट्रिक ऑक्साइड है हमारे पास, देन वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं लाइक ईथर एंड हेलोथेन। ये वॉलेटाइल एनेस्थेटिक, इट इज़ मोस्टली वाइडली यूज्ड वॉलेटाइल एनेस्थेटिक। हेलोथेन सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला है। It inhibits laryngeal and pharyngeal reflexes, रिकवरी स्मूथ, क्विक रिकवरी है इसकी। उसके बाद इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट्स में हमारे पास बारबिटूरेट है, सबसे कॉमनली यूज होने वाला है थायोपेंटेन सोडियम। थायोपेंटेन सोडियम जो है ये बहुत अच्छी ड्रग है एंड बिकॉज इट हैज़ पुअर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, पेनफुल प्रोसीजर शुड नॉट बी कैरिड, क्योंकि ये एनाल्जेसिया नहीं करता है एंड पेनफुल प्रोसीजर्स को इससे नहीं कैरी करना चाहिए। एंड उसके बाद हमारा नॉन बारबिटूरेट एनेस्थेटिक एजेंट है जैसे कीटामीन, डाइजापिन, प्रोपैनडिड, ये सारी ड्रग्स को हम यूज़ करते हैं। अब बच्चों एनेस्थीसिया देने के बाद देर आर सम चेंजेस इन द बॉडी विच वी शुड बी एबल टू टैकल, इसीलिए हम देते हैं प्री एनेस्थेटिक एजेंट। प्री एनेस्थेटिक एजेंट ये वो मेडिकेशन है जो हमें एनेस्थीसिया से पहले देना है ताकि एनेस्थीसिया पेशेंट के लिए सेव हो जाए, सेफ प्रोसीजर बन जाए। इसमें हमारे पास हमें ओपियोइड्स देना है, सिडेटिव हिप्नोटिक्स देना है। पेशेंट को एंजाइटी बहुत होती है सर्जरी से पहले तो एक एंटी एंजाइटी ड्रग भी दे देंगे। एंटी कॉलिनर्जिक भी देना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जो सलाइवरी और ब्रोंकियल सिक्रीशंस हैं उसको कम कर सकें। पेशेंट को सर्जरी के बाद वॉमिटिंग हो सकती है, एंटी एमेटिक देना बहुत ज़रूरी है। दीज आर द प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स।
we need to give. एंड देन कम्स एंटी एपिलेप्टिक एजेंट, जो मिर्गी के दौरे में दवाई दी जाती है। हमारे पास है फिनोबार्बिटॉन, क्लिमिडोन, फेनिटोइन। These are the drugs which are used in epilepsy. कार्बामेजेपिन, ये बहुत इफेक्टिव है ग्रैंड माल और साइकोमोटर एपिलेप्सी में। देन वी हैव इथोसक्सीमाइड, मिथसक्सीमाइड, सोडियम वैल्पोरेट जिसको हम बोलते हैं वैल्पोरिक एसिड, क्लोनाजीपाम, टोपिरामेड, गाबापेंटिन, विगाबैक्ट्रिन, lamotrigine. These are the drugs which are used mainly for epilepsy. अब हम साइकोटिक एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारे पास एंटी साइकोटिक ड्रग्स, जिसमें फिनोथाइजीन है। These agents produce sedation which does not progress to anesthesia. They decrease the agitation, anxiety, aggressiveness in psychotic patients without affecting wakefulness. ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस साइजोफ्रेनिया में से यूज़ करते हैं, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस में यूज़ करते हैं, हैलुसिनेशंस में यूज़ करते हैं, एंटीएमेटिक, इंट्रैक्टेबल हिकअप्स, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन। फिर हमारे पास है हेलोपेरिटॉल एंड लोक्सापीन, क्लोनाजापीन। दीज ड्रग्स नाउ वी हैव एंटी एंजाइटी ड्रग्स। हमने पहले भी बात की है, बेंजोडाइजेपीन्स, एजापायरोन्स, हाइड्रोक्सीजीन। अब आते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स के ऊपर। पहला है माओ इनहिबिटर्स। दे इंक्रीज द कैटाकोलामीन कंटेंट ऑफ वेरियस ऑर्गन so that more catecholamine is to be released by indirectly acting sympathomimetic amines. उसके बाद हमारे पास है TCAs, imipramine, amitriptyline, is indicated in depression illness accompanied by anxiety, agitation. Then we have sertraline, and then we have some mood stabilizers. Lithium carbonate is the drug of choice for bipolar. Then we have some CNS stimulants like analgesics, psychostimulants. These drugs, analgesics, stimulate respiration in coma or fainting because of its narrow margin of safety. They are occasionally used. Then we have psychostimulants. Convulsants में strychnine आता है. Cerebroactive drugs. In this category, इसमें हम डिमेंशिया का ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं। अरिटिनॉल इंक्रीज करता है कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन एंड सेरिब्रल माइक्रो सर्कुलेशन इन इस्केमिक रिस्पॉन्स। पिरासिटाम इम्प्रूव्स फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। उसके बाद अल्जाइमर्स में हम कुछ ड्रग्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि सेंट्रली एक्टिंग कोलिनर्जिक इनहिबिटर कैपरिन डोमेपेजल, cholinergic esterase inhibitor, rivastigmine, galantamine. These are the drugs which are used. अब चलते हैं पार्किंसनिज्म पे। पार्किंसनिज्म जो है, दिस इज अ डिजीज, इज एन एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटर डिसऑर्डर जिसमें एक काइनेसिया, रिजिडिटी, ट्रेमर्स, ये सारी दिक्कत होती है पेशेंट को। ड्रग्स जो सेंट्रल डोपामिनर्जिक सिस्टम है, बेसिकली पार्किंसनिज्म जो बीमारी है ये क्यों हो जाती है, व्हेन देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन dopamine and cholinergic activities. एंड लीवोडोपा हम इसमें यूज करते हैं। पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स, डोपामिन एगोनिस्टिक जैसे कि ब्रोमरगोक्रिप्टिन, amantadine, selegiline. Then we have drugs on central cholinergic system. Ropinirole is indicated for treatment of sinus symptom of idiopathic Parkinson's disease. Pramipexole, ये सारी ड्रग्स को हम यूज़ करते हैं।
Barbiturates are general CNS depressants. In higher doses, barbiturates severely depress respiration. Benzodiazepine exhibit good efficacy. So this is the summary which we have discussed. So today we will be discussing only the chapter 9. In our next class, I will be discussing two chapters, chapter 10 and chapter 11. And rest we have some small chapters which we will be discussing later. Anyone having any doubt? No doubt, sir. Okay, thank you.